Hello guys. Hopefully संडे अच्छा बीत रहा होगा आप लोगों का. और बताइए क्या चल रहा है. आप लोगों को थोड़ा सा रुकना पड़ेगा क्योंकि मैंने 60 सेकेंड्स का एक बैरियर लगाया है बिकॉज अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट. थोड़ी देर वेट करते हैं. बढ़िया भाई बढ़िया है. बस चल रही है ज़िंदगी यार. बहुत बिजी. बहुत. और आज का सेशन जो है हम थोड़ा 45 मिनट के आसपास ही कर पाएंगे. ओके को एक सेकंड देना. यस गाइस फटाफट क्वेश्चंस लिखो फटाफट क्योंकि अभी मेरे को कहीं जाना है. 45 मिनट का है आज का तो इसलिए फटाफट. अमन सर बढ़िया बढ़िया भाई साहब. हेलो टू एवरीवन. बिजी प्लस प्रॉस्पेरिटी. हाँ यार पता नहीं. आई डोंट नो बट आज की डेट में बहुत ज़्यादा काम है. बहुत ही ज़्यादा समय का पता नहीं लग रहा. आई थिंक मार्च एंड अप्रैल दीज आर द मोस्ट बिजीएस्ट फॉर मी. ठीक है चलो फिर फटाफट क्वेश्चंस लेते हैं. चलिए जी. अवनी जी आई एम गुड. सब सही है. थैंक्स फॉर योर सैल्यूटेशंस. ठीक है. हेशम जी पूछते हैं डज नॉर्वे इशू वीज़ा फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स. हाँ भाई साहब. यस दे डू दैट. सो रिसर्च इंटर्न्स के लिए दैट यू हैव टू चेक फ्रॉम यूडीआई बट आई नो दैट दे डू दैट. और बट जनरली अगर आप इफ यू आर कंसिडरिंग दिस थिंग विच इज लाइक what do you say exchange programs, that is only within the EU. I don't think so they have exchange programs with students if you are from Asia, right? So Apurv Patil, hi Arvind, please make a detailed video with IT professional like demanding technologies. Yeah sure I can do that but right now the problem here is again there is a lockdown and probably I think by 15th of March Norway may they will be like entire country will be in lockdown. So once the things are eased, then I will definitely try to do that. The next is Shreya. Hi, I'm Shreya. My fiance is in Sapospor. Yeah, we are getting married soon, and he'll come back. He'll come back to Norway and then apply for my visa papers. And is it better to get on spouse or student visa? No. See, Shreya, the best is to come here on spouse visa, right? Because that is so. Come here as a dependent. And when you are here on family immigration, then definitely you can study also on that visa. So you don't require an additional student visa for that. So come on the spouse visa. Hello G, hello. Weather session started. Which session are you mentioning, Vanita Ji? Please explain. Busy. अरे prosperity नासा की टोपी. That's क्योंकि आज बाल खराब है दोस्त. ये देखो ये है इसलिए नासा की टोपी. Heal yourself. Hello Arvind Ji. Hello dear. सर डिप्लोमा होल्डर कैन अप्लाई फॉर बैचलर्स इन नॉर्वे. शुभम भाई बैचलर्स जो है पब्लिक यूनिवर्सिटीज में यू कैन नॉट डू. इट्स ओनली इन द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज दैट यू हैव टू डू बट यू हैव टू पे अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी. सो आई थिंक रादर देन नॉर्वे यू कैन ट्राई जर्मनी. आई थिंक ओवर देयर यू कैन अप्लाई. ओके. देन नेक्स्ट इज hi sir, how can I apply for research internship in Norway from India by pursuing bachelor's if possible? How to do them by cold emailing or any other way? So Aman, I am not sure. While doing bachelor's, it's not possible. I think so that you can apply for. I think that is my take on this. I think while PhD, it is possible that you can come here as a researcher. But
While bachelors, I don't think so. Since if you are in India, so it's not a possibility while bachelors. But in PhD, it is a possibility. Okay. And then how can we change to India as Norway? I didn't understand. Sorry for this. Then the next question is from Sir, will a law degree from Oslo University be valid or valid? Yes, yes, of course. My sister-in-law, she is doing herself actually the same degree, so it is very much valid in India. Not only in India, but I think throughout the world. So that is very well recognized. Don't worry about that. Hansel, will you apply for Norwegian citizenship? If yes, after how long would you get it? So, Hansel, as of now, I haven't applied because I'm still thinking whether I should change my citizenship. I'm actually waiting for this thing that India will allow dual citizenship. If they don't, then let us see. So, right now, life is fine without citizenship over here. And generally, it takes about 7 years. So, I think I'm already qualified for that, but I haven't applied the citizenship. So, out of 10 years, you should have stayed in Norway for 7 years. And besides that, you should have certain language requirements. And we have recently shot a video with one of the German YouTubers flying abroad. And over there, we have compared the life and all of these questions which you have, where I should study, what should I study, what is the PR requirement, what is the citizenship requirement for both Germany versus Norway. So probably these videos will come on Saturday. So please check them out. Both the channels, Flying Abroad and Namaste from Norway. Okay, ji. चलिए next geology PhD in Norway. So Jitesh ji, I think a couple of people are doing PhDs in geology. I think you should check University of Stavanger, where I also did my PhD from. So check that. And the website where you can check all of the job opportunities in Norway, that is jobbnorge.no. Chaitanya, please tell, is there a scope for architecture? So Chaitanya bhai, I think the scope is there, but as I mentioned in all of my live streams and videos, that for these fields, for example, if you want to work in the construction industry, if you want to work as an architect, you must know Norwegian. And if you know, then definitely your chances increase of getting a job. Hello, sir. Hello, dear. Hello, Arvind. I want to ask about PhD opportunities in Norway after completing master's program in other Scandinavian countries. Would you say it gets treated differently from masters in India? So, Vaishnavi ji, no, I don't think so. It gets differently treated in India. What matters for a PhD is that do you have the relevant background for that particular research which you are going to apply? So that is one thing, and definitely your grades matter and your publications matter. All of these things matter. So it doesn't matter whether you have done masters from UK or whether you have done masters from, say, India, as long as you can prove to the expert committee and to the interview panel that you are the right candidate and you have done some work in that research field, then definitely you would have a chance. So that is one thing. And Abhijit Desai, hi Arvind, can you please elaborate more on Barnevelt law? So Abhijit ji, I think there is on YouTube, you will find a lot of videos about this Barnevelt. So I think this is a very sensitive topic. So the law, I think so, I'm not an expert, but the law generally says is that if somebody complains that you as a parent are not able to take care of your child very well, then the child becomes the custody of this organization called as Barnevelt. But I mean, it doesn't happen to the normal people, right? I think so. So there have been such extreme cases where the child have been taken away from the custody, because in Norway the child is a the child is responsibility, or I would say it is a property of the government, right? So that is something. So I myself not much aware of this, but what I have heard from other people is that it's only in the extreme cases. For example, the parents are they take drugs and then they don't take care of the child. In such cases they take. But I think so, one more thing, that there have been certain cases where parents were good and then they filed a case. So now some sort of what do you say, cases have been pending in the EU High Court or something. So I think you get scared when you hear this, but I don't look into too much into this
into this law. It's so don't worry too much about it. I mean, there's a lot of hype on this, and but I think so. It's better it's for the betterment of the kids. Yeah, but it seems sad as well. How are you, brother? Brother, I'm very good. And today you'll see I am very, what do you say, in anxiety because I have been up since morning and working, and now I thought of having this session. चलिए जी. Okay, sir, I got PhD in Stavanger, but how my husband can come with me? Avni. So Avni ji, your husband can directly come with you because when you get a PhD in Norway, you are an employee of that university. So while you apply for your visa, you can also apply the visa as a dependent visa for your husband. That is family immigration. So that there is a very straightforward process, and I know that in University of Stavanger they have this third party which will help you in the visa immigration process. So just ask your HR and they will give you all of the information. सर बीएड और एमएड नॉर्वेजियन में होती है या इंग्लिश में? सो दोस्त, बीएड जो है कोई भी तरीके का बैचलर्स जो है दैट इज ऑलवेज इन नॉर्वेजियन, नॉर्वे में प्रॉब्ली यूनिवर्सिटीज में. बट हाँ, एमएड टाइप जो होगी, जो भी मास्टर्स होगी, वो इंग्लिश में होती है. सो हर यूनिवर्सिटी का अलग है, बट जनरली मास्टर्स आर इन इंग्लिश. लेट्स टॉक चाइना. हेलो सर, इज इट ओके कमिंग टू Oslo Met with the years allowance this year? I don't understand your question, brother, but the point is, यहाँ की अगर आप you are talking about this lump sum money which you have to show in your account, then I mean for because every year you have to show it. As a student visa, you will get visa only for first year, and then at the second year also you have to show. So I think so. Come here, search for a part-time job, and try your luck. So I think so. If I were you, I would definitely come here, right? Suchit, is it a good idea to do masters in information systems? Are there any scope for job market? So Suchit, see, it's for me. I think what I personally feel is that IT sector is booming in Norway, and it is kind of bit difficult for me to actually comment upon the scopes, because if I say yes, there's scope here, and you come here and then you don't find a job, then you'll say, oh my god, इस बंदे ने मेरे को गलत बताया. So I think so आप और भी रिसर्च कीजिए, क्योंकि मेरे को इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है. बट एक जो मेरा what I would say, I have a notion that मैनेजमेंट के कोर्सेज जो नॉर्वे में है, दे आर नॉट वेरी गुड फॉर यू. सो ट्राई समथिंग टेक्निकल. दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू से, राइट? और आप में से क्योंकि बहुत से क्वेश्चन है, तो दोस्तों एक सुपर चैट लो और थोड़ा ऊपर आ जाओ. और साथ ही साथ ऑल ऑफ आप भाई लोग या बहनें जितनी भी हैं, you can actually take our channel, our membership from our website, and then you can directly talk to me. That is also a possibility, right? Because यहाँ पे तो जितने बंदों के हो पाएंगे उतने, क्योंकि आधा घंटा ही है दोस्तों. Next is Bachelors is taught in Norwegian, I guess. Yes, you are correct. It is taught in Norwegian. Okay. Next is Sharvan Kumar. I applied to University of Stavanger for this August. Do you have an idea by which time college will let me know whether my application is accepted? So Shravan, generally every time, most of the universities जो हैं around April mid or May starting or April end. 15th April to 5th of May, you'll get your answer. But few universities, I know they have their answers are out. For example, Oslo Met is out, and Høgskolen Vestland is out, and then Østfold College is out. The next is Kasaki Mumbai. Sir, I am myself working in artificial intelligence and doing an internship. Do you think after taking a small membership, I would have a word with you regarding the same for Scopus? Yes, sure, dear, you can do that. But I would recommend that you take membership from our website, namastefromnorway.com. And then we can definitely have a discussion about it. And we can discuss it on Tuesdays if you take it now, because Monday, Tuesday, I have lectures. So very busy life. But from Tuesday, I am like, Tuesday is the most relaxed. So I tend to talk to people on Tuesdays. Okay. Then is Bhumika. How prospective is getting job in oil and gas industry in Norway after master's degree from NTNU? I'm hoping to get admission there. So Bhumika, the point is, see, there is a big, there is, I would say, this is a paradox or a hoax. So what I would say, कि everyone is shunning out oil and gas. So definitely the jobs or the projects, especially in Norway, they are still happening, because most of the revenue in Norway comes from oil and gas. So if you are a good student and if you have some work experience, then I don't think so it should be difficult for you to find a job. Okay.
So definitely, oil market is very sensitive to the oil price. So there's a luck factor as well. So like when I came in 2012, and I think that time the oil was at the highest, 100 and more than I think 110 or 130 something. So at that time there were a lot of jobs. So just check on that how is the oil price over the past 1 year and how is it going. I know ki in India the oil prices are increasing, but that is something else. That's different. But we are talking here of the crude oil. Okay. So I think so. If you get admission, there is no harm in coming here. अक्स ठाकुर जी, सर हम अगर यूरोप आ जाते हैं और वहां पर मिल जाते हैं तो क्या हम शादी इंडियन से करनी चाहिए या यूरोपियन गर्ल से? सो अक्स भाई देखो, पॉइंट ये है, इट डज नॉट मैटर। इंडिया में जो शादी है इट डिपेंड्स अपॉन अ लॉट ऑफ फैक्टर, राइट? आपके घर वाले अप्रूवल करते हैं या नहीं करते हैं। अगर आपको कोई विदेशी बंदी मिलती है तो कर लो शादी, देयर इज नो हार्म इन इट, क्योंकि मैरिज इज ऑल अबाउट, इफ यू वांट एक लंबा गेम खेलनी है मैरिज में भी आपको, तो इट्स की आपकी आपस में कितनी बनती है, नेशनैलिटी का इतना फर्क नहीं होना चाहिए, आई थिंक सो। बट मेरा तो जो था, मेरे को तो इंडियन से ही करनी थी, शिमला से ही की बंदी से ही करनी थी, एंड आई फाइनली डिड दैट। तो आपके फंडे स्ट्रेट होने चाहिए, अगर आपको कोई मिलता है तो definitely do that, because when I came to Norway I was definitely not looking for like a girl for getting married, क्योंकि मेरे को था कि हाँ सेम जगह से होगी, then there are a lot of benefits of that। but हाँ, अगर आप यहाँ ये सोच रहे कि हाँ भाई किसी विदेशी से शादी कर लेता हूँ, सिटीजनशिप मिल जाएगी, then that is also up to you, there is no point। okay, हेलो सर, हेलो डियर पंकज जी। फिर आते हैं जी ऋतिक जी, मास्टर इन केमिकल इंजीनियरिंग इज पॉसिबल इन नॉर्वे? आई थिंक सो, यस ऋतिक, इट शुड बी पॉसिबल। जस्ट आप वेबसाइट्स यूनिवर्सिटीज पे जाइए, एंड आई थिंक studyportal.no है और mastersportal.no करके है एक वेबसाइट, उस पर चेक कीजिए एंड यू विल गेट द आंसर। It would be great if you could explain about the job opportunities after completing LLM in Norway. I'm from India. श्रेया जी, I already have a video on my channel. Actually, आप check कर सकते हैं उसे, जहाँ पे मैंने अपनी sister-in-law के साथ I made a video, and she's presently doing it from there. So you can even talk to her if you want. So if you take the membership, I will make you talk to her. Okay, that is one thing. What is the minimum pay in part-time job? How many hours are you allowed? How is the scope? आदित्य भलगट जी, देखिए दोस्तों, मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो है मैंने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। तो आप अगर जाएंगे चैनल पे, पार्ट टाइम जॉब्स इन नॉर्वे लिखो हमारे नमस्ते नॉर्वे पे, आपको एक पूरा डिटेल में मिल जाएगा कि कितनी मिनिमम वेज है। आई ऑलरेडी कवर्ड, एंड आई एम रेफरिंग यू गाइज देयर, बिकॉज जिस टाइम ये वीडियोस बनाता हूँ तो बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है और मेरे को फैक्ट्स याद रहते हैं, बट राइट नाउ आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। बट मिनिमम वेज जो मैं बोलूँगा अराउंड 150 to 160 नॉक होती है, और 20 आवर्स पर वीक आई थिंक यू कैन वर्क ऑन योर स्टूडेंट वीज़ा। ओके, देन इट इज हील योरसेल्फ। अरविंद जी, आई नीड टू टॉक टू यू बट कंफ्यूज, कितना टाइम लगेगा आपसे बात करने में? सो कैसे स्टार्ट करें? सो हील योरसेल्फ जी, आप क्या कर सकते हैं, देखिए आप namaste.norway.com पे जाइए, वहाँ पे बेसिक मेंबरशिप है, ओके, उसको लीजिए। उसके बाद आप जो है 30 मिनट की व्हाट्सएप कॉल, जूम कॉल, कोई भी कॉल मेरे साथ कर सकते हैं। ओके, आई थिंक दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट आपके लिए। पारस जी पूछते हैं, भाई क्या नॉर्वे में एक यूट्यूबर है पॉपुलर, जानते हो कि एक यूट्यूबर है? भाई क्या नॉर्वे के एक यूट्यूबर है पॉपुलर, जानते हो क्या? कौन भाई? आई डोंट नो, मैं तो अपने आप को पॉपुलर मानता हूँ। ठीक है। निहार जी पूछते हैं, बट नॉर्वे अलाउज डुअल सिटीजनशिप फ्रॉम 2020? यस निहार, नॉर्वे अलाउज डुअल सिटीजनशिप फ्रॉम 2020, बट इंडिया शुड ऑल्सो अलाउ, बिकॉज maybe I don't want to give up my Indian citizenship as of now, but Norway allows, that's true. Then it is Abu Noob. I want to study Masters of Spanish and American Latin Studies at the University of Bergen. So yes, dear, do that. I'm not sure what is your question. I think if there is a course, then and you fulfill the criteria, then please go ahead. Okay. Then it is Shubham Pathak. Sir, how much career gap is acceptable in Norway for masters? I don't think so, Shubham. There is any sort of any such sort of requirement. As long as you can justify why you took the career gap, that is sufficient. Okay, so but what I would, not just in Norway, but I would say 2 to 3 years, it's fine, but not more than that, and you should be able to justify it. Okay, Sumit, how much English can help in getting a job and study? The relevance of English in daily life. Sumit, the video which is coming on Saturday with our flying abroad from Germany, so we have covered this topic, but I'll tell you, you can survive
with English over here, right? That's not a problem. People understand English, they speak very well English, but there are few jobs where you are supposed to know Norwegian, right? And Norwegian would help. But for example, in an IT sector, I have seen a couple of people who don't know Norwegian and they are still working there. Then even in the oil and gas sector, I know a couple of people. Even myself, when I got a job, I did not know Norwegian that time. So you can definitely survive. But then certain other, I would say, sectors such as health sector, any managerial job, or say construction worker, or even in the kiosks when you work over there, you need Norwegian because these are customer facing jobs. Okay. And then it is Aditya Shah. I want to do MSc Agriculture from Norway. So Aditya ji, please do that. You can definitely do that. Just search for the course and make sure that you have the relevant percentage. I think 65, 70 के आसपास, and you have done your bachelor's, which should be of 4 years. Okay, then you can definitely do. And I would say there is a good scope of this over here as well. Plus Norwegian IC. Okay. Sir, are there chances of getting a job as data scientist in Norway by applying through LinkedIn? Harsh, there is no harm in doing that. You can just apply and try your luck. But I think so the chances are quite bleak. And the reason being because out of 10 public universities, I would say 5 to 6 public universities in Norway, they are providing the program in data science. So you know that how much outflux of the data scientist is in Norway. So right now the job market is good, but the people who are coming from the college education, they are also now in high numbers. So I think until and unless आप अपनी field में बहुत ही top हो, right, you know something which nobody knows, then they might hire you. Otherwise, it's a bit difficult. Can you tell something about Erasmus Mundus scholarship, Chirayu Patil? So Chirayu ji, I don't know much about this क्योंकि मुझसे कई लोगों ने पहले भी question पूछा है. So unfortunately, I don't know about this. I have heard about it, but I don't know. So probably Google पे जो आपको information मिलेगी, that is the best. And then Shubham पूछते हैं scope for supply chain. Scope for supply chain. भाई scope for supply chain जो है, again मैं आपको बताता हूँ, इसका scope जो है, I would say it is good and it is, ये जो हम smart cities की बात करते हैं या इनकी बात करते हैं, उनके लिए भी जो है generally supply chain is a very good thing. But again, I think so इसमें अगर आपको career बनाना है, so Norwegian is something which is required. चलिए जनाब, अगला scope for mechanical design engineer. So Abhishek ji, I am myself teaching mechanical design here, so scope is very good. I think so. Mechanical design is a very hot topic, और खासकर अगर आप बात करें generative design की, topology optimization की, जिसमें कि artificial intelligence और design का एक confluence होता है. So I think that is the scope is very good over here. So again, किसी भी सेक्टर में scope improves अगर आप Norwegian भी बोलते हो और अगर आप convince कर लेते हो बंदे को कि भैया मैं तो I am the pioneer of this field, right? So that is one thing. Okay, next, how many years of visa will be granted if you get admission from a Norwegian college? Generally, Shravan ji, for 1 year, I think so, which is renewable. So you have to show this money and your grades. So अगर आप August 2020 में आते हैं तो August 2021 तक ही आपको visa मिलेगा. So you have to actually reapply for the visa from Norway, and it is a straightforward process. The only two things which they require is that what grades have you achieved in your previous year, that you must have passed all of the exams, and also what is the जो आपका sum आपको दिखाना है money 10 lakhs वो आपको account में दिखाने हैं. Otherwise it is straightforward, right? नमस जी पूछते हैं, सर कैन यू टेल दैट आई शुड बी अ स्टूडेंट इन नॉर्वे और रशिया? सो ब्रदर मैं तो नॉर्वे ही बोलूंगा, क्योंकि देखो नॉर्वे और रशिया को आप कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ कंट्री आल्सो आई थिंक रशिया इज नॉट मच डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ यू नो अथॉरिटी. देखा जाए तो वो तो इंडिया से भी बुरी है, क्योंकि वहाँ पे जो है आप मतलब वहाँ की गवर्नमेंट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, यू अंडरस्टैंड, लाइक इट्स मोर ऑफ एन ऑटोक्रेटिक रूल ओवर देयर. नॉर्वे में इट्स वेरी गुड. और आप देखेंगे मेरे कई फ्रेंड्स थे मेरे साथ पीएचडी कर रहे थे, दे वर फ्रॉम नॉर्वे, सॉरी दे वर फ्रॉम रशिया एंड दे वर डूइंग पीएचडी इन नॉर्वे. सो आई थिंक सो नॉर्वे वुड बी अ गुड चॉइस. Is there a scope of, Pranjal ji पूछते हैं, is there a scope of computer science or IT jobs, and is Duolingo English test is acceptable in Norwegian University? So I think so computer science और IT की jobs तो बहुत अच्छी है, but again the trick is कि if you are in India then the chances are a bit low. अगर आप यहाँ पढ़ते हैं then the chances are good, okay, to get a job. And I think so
I mean, I don't understand that why do you need this Duolingo English test? I don't think so it is applicable. ये जो IELTS का एग्जाम है आपको सिर्फ you have to give that IELTS TOEFL which is like either IDP ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटिश काउंसिल, यही दो हैं जिनके एक्सेप्टेबल है. Duolingo का I don't think so. सर टीचिंग का स्कोप बहुत कम क्यों है? अगर मैं MSc MEd और फिर PhD भी कर लेता हूँ तो स्कोप कम है क्या? मैं हाई स्कूल से यूनिवर्सिटी टीचिंग तक की बात कर रहा हूँ. सी अगर आप एज अ टीचर नॉर्वे में स्कोप कम इसलिए है क्योंकि जॉब्स जो है वो इतनी ज़्यादा इस सेक्टर में निकलती नहीं है. क्योंकि देखिए पब्लिक सेक्टर में एक बार जो प्रोफेसर आ गया बन के या एसोसिएट प्रोफेसर, वो फिर जब तक रिटायर नहीं होता तब तक छोड़ता नहीं, राइट. अनलाइक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, अनलाइक आपके जो सिंपल जॉब्स है, इसलिए स्कोप कम है. बट अगर आप किस्मत का बहुत बड़ा रोल है आई थिंक. यहाँ पे आपने PhD करी और उसी टाइम कोई नई, जैसे मेरी किस्मत आई थिंक इट वाज वेरी गुड. जब मैंने PhD करी तो जो एक नई यूनिवर्सिटी बन गई, कॉलेज से यूनिवर्सिटी टर्न हो गया, और उनको वही बंदा चाहिए था जो कि मेरे पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस था. तो आई थिंक सो दैट इज व्हाई आई गॉट. बट अदरवाइज पुरानी यूनिवर्सिटीज में लगना बहुत मुश्किल है. दैट इज व्हाई द स्कोप इज नॉर्वे, सॉरी स्कोप इज बिट लेस. ठीक है, नेक्स्ट पूछते हैं अब्दुल जी, MBBS इन नॉर्वे. भाई साहब MBBS आप नहीं कर सकते, हमारे चैनल पे एक ऑलरेडी वीडियो है, उसको चेक कीजिए. ठीक है, सारा प्रोसेस उसमें बताया हुआ है. आदित्य के मैंने क्वेश्चन कर लिया है. गुड आफ्टरनून सर, हाउ यू डूइंग? भाई आई एम डूइंग गुड. आजकल ये हो गया कि काम कर करके इट्स लाइक स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम लग रही है मुझे तो अपने में. मेरे को भी थोड़ा थोड़ा आई एम स्टिल गिडी, आई फील सो. तो हेल्थ वाइज नॉट द टॉप नॉच, बट आई थिंक सो आई विल बी फाइन, नो प्रॉब्लम. हेलो, थैंक यू सो मच. थैंक यू सर, थैंक यू. मिनिमम पे भाई मैंने बता दिया है, मैं फिर से रिपीट नहीं कर सकता, बट 150 160 नॉट के आसपास है. सुमेघ जी, आई वांट टू स्पेंड माय लाइफ देयर, इंशाल्लाह हो जाएगा. हिंदुस्तानी जी पूछते हैं, सर आई एम इन 12th क्लास, आई वांट टू कम एंड स्टडी इन नॉर्वे फॉर MBBS कोर्स. डियर हिंदुस्तानी भाऊ क्लब, MBBS आप नॉर्वे से नहीं कर सकते. ओके, प्लीज़ हमारा वीडियो जो है आप चेक कीजिए. जस्ट राइट डॉक्टर इन नॉर्वे, नॉर्वे आ जाएगा. ठीक है, आप MBBS नहीं कर सकते यहाँ पे. यूक्रेन जाते हैं, मेरे कई दोस्त चाइना गए हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हैं. ओके जी, एंड आई हैव 8 years of teaching experience for undergraduate and program. क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त? ओके, हाउ मेनी years of study needed to study bachelors? वाओ मूवीज जी, 13 साल की चाहिए, 13 years. बट बैचलर्स आप पब्लिक यूनिवर्सिटी से नॉर्वे में नहीं कर सकते. जर्मनी में ट्राई कीजिए, वहाँ पे आप जर्मन में ही कर सकते हैं. और नॉर्वे में एक तो इट डजंट अलाउ, और दूसरी जो बैचलर्स है दे आर इन नॉर्वेजियन. ओके, राजनवीर सिंह जी, हेलो डियर, आई एम इन 10th, आई वांट टू कम टू नॉर्वे नियर फ्यूचर, व्हाट शुड बी माय प्लान और स्टेप्स? सबसे पहली बात तो भाई बहुत अच्छी बात कि आप 10th में ही ये सोच रहे हो. तो भाई देखो, इंजीनियरिंग करो, सिंपल. IT पकड़ लो, फील्ड जो है मेरे को लगता है 10-15 फ्यूचर वही है. तो मैथ स्ट्रॉन्ग, फिजिक्स स्ट्रॉन्ग, केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग, अपना IT इंजीनियरिंग 12th में वो पकड़ो, और उसके बाद इंजीनियरिंग कर लो बस शांति से. इंजीनियरिंग एक ऐसी चीज़ है, आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जा सकते हैं. वो आपका एक तरीके से अच्छा पासपोर्ट है, क्योंकि आपको पता है देखो इंडिया जो है IT सेक्टर में कितना अच्छा है. मतलब इतनी ज़्यादा कंपनीज है, और फिर ऑफ शोर भेजते हैं आप लोगों को. दैट इज़ वन थिंग. और जो बैचलर्स में आप पढ़ते हो इंडिया में, दैट इज़ वेरी मच वैलिड. वैसा जो है MBBS अगर आप सपोज इंडिया से करते हो, आप डायरेक्टली यहाँ डॉक्टर नहीं बन सकते. तो मैं तो सभी को बोलूँगा भाई जो कर सकता है इंजीनियरिंग कर लो. दैट इज समथिंग. ओके, लेट्स टॉक चाइना. फॉर सेम सब्जेक्ट डज द यूनिवर्सिटी रैंकिंग मैटर्स? नो, आई डोंट थिंक सो. इट डज नॉट मैटर दैट मच. ओके, if I get work visa of Norway, can my mom and my wife come with me? Forbidden. So your wife can definitely come with you. Okay, and your mom, you will have to document that there is no one in India who can take care of her, right? And then she can come. But you have to take the guarantee. You have to show some money. That is one thing. I would like to study masters. Is there any part-time job to sustain for 2 years? Mohammed ji, I already have a video. Check कीजिए कौन कौन से part-time jobs है. Please, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरे भाइयों और बहनों कि यार वीडियोस प्लीज चेक कर लो, और क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी वहाँ पे है. ओके, और अगर किसी को कुछ ज़्यादा पर्सनल सवाल है तो मेंबरशिप ले लो, then also you can talk. But you can, yes, people have sustained for 2 years. You can sustain. And part-time job जो है वो मैंने सारी डिस्कस करी है. आदित्य भाई मैंने बता दिया है मिनिमम पे, हाउ मच आवर्स आर अलाउड, हाउ इज द स्कोप, ये मैंने आपको बता दिया. अगेन रिपीट, 150 से 160 नॉक पर आवर, 22 घंटे, 20 आवर्स पर वीक है. और स्कोप जो है अगर नॉर्वेजियन आ जाती है तो स्कोप बहुत ज़्यादा है, वरना आपको जो है
वेटर की जॉब या ऐसी जॉब्स मिल जाएगी, ठीक है। और सिटी टू सिटी वो है, ऑस्लो में आई थिंक ज़्यादा चांसेस है। ओके जी, थक गया हूँ अब मैं दोस्तों। इज जगदीश जी सर, इज 3 ईयर बैचलर डिग्री एलिजिबल? आई नो डियर, इट इज़ नॉट एलिजिबल। एलिजिबल इसलिए नहीं है क्योंकि आपने 12th के बाद 3 साल करी है, 15 यहाँ चाहिए, 16 साल की एजुकेशन, तो आपको 1 साल का जो है मास्टर्स इंडिया से करना पड़ेगा। ओके, ललित शर्मा जी, हेलो हेलो डियर। ओके ओके ओके। हाउ मच टाइम समवन कैन गेट पीआर इन नॉर्वे? 3 साल के बाद दोस्त, 3 साल अगर आप स्किल्ड वर्क परमिट पे है तो। ओके, बट एज अ स्टूडेंट वो 2 साल काउंट नहीं होते, आपको जॉब चाहिए 3 साल के लिए। और पीआर पे एक वीडियो है, प्लीज चेक कीजिए, नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे पे जाइए चैनल पे, वहाँ पे एक वीडियो है पीआर, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ दी हुई है आपको, ठीक है। Our parents and in-laws allow independence? Somebody has a job in Norway. Again, I think yes, both are allowed, but you have to document. आपको ये शो करना पड़ता है कि नॉर्वे में, कि सॉरी इंडिया में उनका ध्यान रखने के लिए कोई नहीं है। सो दैट इज पॉसिबल। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम इंडिया, लॉट्स ऑफ लव ब्रदर, थैंक यू। आर पेरेंट्स ओके, आई एम इन 10th दोस्त, मैंने बता दिया है आपको। ओके, क्या प्लान है? थैंक यू सर फॉर योर गाइडेंस, इट हेल्प्स अ लॉट। नो प्रॉब्लम डियर, नो प्रॉब्लम। इज देयर एनी स्कोप फॉर इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स? जी हाँ, इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स का भी स्कोप है। आई थिंक द स्कोप इज गुड। Is it necessary to get a tested document from MOFA to get visa? So Sharjil ji, I'm not sure, but I think so कुछ चीजें हैं जो कि आपको करानी पड़ती है, जैसे कि मैरिज सर्टिफिकेट है, that is something जो आपको अपोस्टल कराना पड़ता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या फॉरेन अफेयर्स से। So few documents you have to. Okay, if I move to Norway, how long can parents stay? तो देखिए, अगर आपके पेरेंट्स यहाँ आते हैं टूरिस्ट वीजा पे तो 89 days दे कैन स्टे, बट एक प्रोविजन है जहाँ पे 9 months के लिए दे कैन स्टे विद यू। ओके, दैट इज आल्सो, बट दैट इज अ वेरी कॉस्टली, आपको अराउंड 10,000 आपको उसकी फीस देनी पड़ती है। ओके जी, वाओ मूवीज, हाउ मेनी इयर्स ऑफ स्टडी रिक्वायर्ड फॉर बैचलर्स? 13 साल दोस्त, 13, क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ 12th नहीं होती, यहाँ 13, यहाँ 13 साल की होती है, जैसे हमारे 12th तक होती है, यहाँ पे 13 साल होते हैं। इज नॉर्वे बेस्ट फॉर बायो साइंसेज रिलेटेड फील्ड? मोहम्मद जी, I don't know whether it is best, but हाँ, biosciences भी यहाँ पे it is an emerging field. Okay. Ranish ji, is PR possible after studies? No dear, it is not possible, as I mentioned, and मैंने वीडियो में भी बताया है कि 3 साल की जॉब आपको चाहिए, ठीक है। Sir, I'm from Pakistan. What is the scope of chemical industries? असद जी, आई डोंट थिंक सो कि केमिकल इंडस्ट्री यहाँ पे इतनी फ्लोरिशिंग है। हाँ, प्रोसेस इंडस्ट्री अगर आप मिलती जुलती बात करें, क्योंकि यहाँ पे रिफाइनरीज हैं और ज़्यादातर यहाँ जो है गैस प्रोड्यूस होती है, ऑयल प्रोड्यूस नहीं होता। ओके, तो प्रोसेस इंडस्ट्री यहाँ पे आई वुड से इट्स गुड। हाउ मच गैप इज एक्सेप्टेड? बता दिया है मैंने भाई को। सर, इज देयर एनी एंट्रेंस एग्जाम टू गेट एडमिशन इन MA? नो डियर, देयर इज। परम जी, यहाँ पे आपको देखिए, अच्छी बात यही है नॉर्वे की, तो पढ़ाई फ्री है और कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है मोस्ट ऑफ द केसेस में, राइट। Okay. Did all the MSc taught courses will be in English or Norwegian? Revan ji, सबसे पहले तो वीडियो चेक कीजिए। I already have that, and yes, most of the courses at the master's level they are in English. Okay. सर जी, बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप क्या है? तो दोस्तों, अब बचे हैं मेरे पास 6 minutes. ओके, क्योंकि मुझे इसके बाद कुछ और अपॉइंटमेंट है, बट हाँ चलिए, जितने का होगा मैं उन सब के लिए बताता हूँ क्या क्या क्वेश्चन है। कहाँ बचे थे हम यार? अच्छा जी, सर मेरी बैचलर्स में 6.76 CGPA है, इज देयर एनी चांस कि नॉर्वे की पब्लिक यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन मिल जाएगा? सो ब्रदर, इट डिपेंड्स कि आप किस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, एलिजिबिलिटी जो है 60% है, सो आप अप्लाई कीजिए डेफिनेटली। बट हाँ, अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो में या NTNU में या UIT में अप्लाई कर रहे हैं तो चांसेस कम है, बिकॉज दीज आर वेरी हाईली कॉम्पिटिटिव। ओके, इज देयर एनी वे आई कैन स्टडी पार्ट टाइम विद अ वर्क वीजा इन नॉर्वे? Padmini Iyer, I think so. Yes, you can definitely do that. There are a lot of private universities. Hoy School in Christiania is there, Norof is there, and BI Norwegian School is there. You can definitely do that. You can do that. If you have a work visa, you can definitely do that, right? And then it is Yashasvi, hi dear, hello G. Then it is Ajay Bhai Parmar, hi sir, I'm planning in Norway computer engineer. Is that possible? So brother, if you want to study, then definitely it is possible, right? अगर job आप इंडिया से सर्च करोगे, then it is kind of bit tricky. Okay.
Okay. Abanoub, after the Master of Spanish in Norway, also have 4 years experience with customer service. It will be a high opportunity to get a job in Norway. I heard it must be the same study to accept. Yes, Abanoub, your master. For example, if you want to apply for masters in computer science, your bachelor should also be in the same subject, right? It's not like you have studied arts and then you are applying, because that is a straightway rejection. And your work experience doesn't count that much. So what matters to get admission into Norway is that how much have you scored in your bachelor's, okay? And another is that how relevant is the field. Okay, I would like to do MSc Information Security in University of Oslo. So Revanji, please go ahead. You can do scope of maritime industry. The scope is good as of now. It's good, maritime industry, but it is moving towards, more of like digitalization of the maritime industry, electrification of the maritime industry, everything. Sahil, ACCA is acceptable or not? Brother, I don't know. What does that mean? Hello sir, क्या वहाँ Indians के लिए teaching jobs है? Delete gamer. डियर, मैं एक को जानता हूँ, हमारे एक दोस्त थे स्टावेंगर में जिन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से कुछ पढ़ाई करी थी, आई थिंक सो, एंड शी इज नाउ टीचिंग हियर, बट द पॉइंट इज उनकी नॉर्वेजियन बहुत अच्छी है. सो डेफिनेटली इफ यू नो नॉर्वेजियन देन यू कैन गेट द जॉब. और अनदर इज दैट देयर आर लॉट ऑफ इंटरनेशनल स्कूल्स, वहाँ पे भी आपको जॉब्स मिल सकती है. Okay, is age and gap matters to apply study visa? Age to definitely does not matter, but I think so gap would matter a bit, right? Is Norway ending free education since other Nordic countries and free education? Harshji, we have a video about that whether they are ending or not, so please check that out. And the results, I think this issue will be discussed in the parliament in May, and the moment the news comes, I will bring it to you guys, okay? Then Shubham ji, is there any scope of masters in international management? Brother, as I mentioned कि ये जो international management का scope यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर आपको Norwegian नहीं आती, okay? Then Rohan ji, hello dear, is it worth taking education loan and coming to Norway? Like how much time would I be able to pay back? Shahpreet, यार it depends कि आपका sector क्या है. अगर आप IT से related कुछ पढ़ाई करने आते हो जहाँ और आपके वर्क एक्सपीरियंस ऑलरेडी है, देन यू कैन डेफिनेटली, आई थिंक इट इज वर्थ. बट अगर आप कोई ऐसा कोर्स जैसे साइकोलॉजी, फिलोसफी करने के लिए आ रहे हो, देन आई डोंट थिंक सो इट मेक्स सेंस, राइट? कैन वी ईट पानी पूरी इन नॉर्वे? जी हाँ, यू कैन डेफिनेटली ईट, बट स्ट्रेट आपको रोड में नहीं मिलेगी. शॉप्स हैं जहाँ पे बनी बनाई मिलती है. हमने पिछले संडे ही एक बर्थडे सेलिब्रेट किया है, मतलब हमारी सिस्टर इन लॉ का बर्थडे, एंड देयर वी एक्चुअली, पानी पूरी मेरी फेवरेट है दोस्त. पानी पूरी, गोलगप्पा, पुचका. Currently, is UDI providing work permit? Lakshay Jain. So those the work permit, तो I think so, yes, they are doing that, because it depends कि आपके पास अगर job contract offer है, then you apply. There is a process for that. And how do you do that? उसके ऊपर भी एक वीडियो है, देखिए जाके. और I think so they are applying, but definitely थोड़ा कम है अभी जो rate of issuing the work permits because of Corona. GRE required to do MS in Norway, ABCG? No, in most of the courses it is not required. Okay, चलिए अब लास्ट के 2 मिनट्स में जो सवाल है वो ले लेता हूँ. मैग्नस कार्लसन को जानते हो नॉर्वे में? भाई उसको कौन नहीं जानता, बट मैं कभी मिला नहीं हूँ. बट हाँ, वो स्टावेंगर में एक रेस्टोरेंट है जाउक करके, वहाँ दैट इज हिज फेवरेट. सो दैट इज वन थिंग. एनी प्रोफेशनल कोर्स फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स लाइक सी इन इंडिया? ब्रदर, इसका तो इतना आइडिया नहीं है. करण चौहान जी पूछते हैं, इज देयर एनी स्कोप फॉर मास्टर्स इन ज्योग्राफी इन नॉर्वे? आई डोंट थिंक सो डियर, देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप, बट हाँ जनता करती है, तो आप भी डेफिनेटली इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड और यू हैव, क्या बोलेंगे इसको, कि इंग्लिश बोल के ना तो मैं पक जाता हूँ यार, क्योंकि कोर्स में भी इंग्लिश, हर जगह इंग्लिश. तो मैं हिंदी में बताता हूँ आपको कि हाँ स्कोप अच्छा है. नहीं सॉरी सर, स्कोप अच्छा नहीं, बट द पॉइंट इज कि ज्योग्राफी आप करने आ सकते हो, बट प्रॉब्लम ये होगी कि उसके बाद जॉब मिले या ना मिले, उसका स्कोप मुझे नहीं पता. ठीक है भाई, यो चार्टेड अकाउंटेंट देयर सर. यार ये सब जो स्कोप वाले वीडियोस है ना, ये मेरे को कोई बंदा पकड़ना पड़ेगा जिसने ये कोर्सेज पढ़े हैं, मैं उनके साथ डिस्कस करके आप बता दूंगा. ठीक है, ओके जी, ओके भाई, ये तो बहुत हो गया. तो दोस्तों अब जो है जितने क्वेश्चन है, अब आई थिंक, क्योंकि मेरे को 11:40 तक का ही टाइम था, क्योंकि मेरे को जाना है इसके बाद कहीं एक अपॉइंटमेंट है मेरी, तो आज मैं सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस ले पाऊंगा. बट आप लोगों से प्लीज़ तो हताश ना होइए, आई विल ट्राई कि मैं अगले संडे और से अगले संडे भी आऊँ. बट आज का सेशन इतना ही करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि
इसके बाद जाना पड़ेगा कहीं और। ओके, तो अगर आपके कुछ और सवाल है तो आप क्या है जी, मेंबरशिप ले लो, बात कर लो, ठीक है, या फिर वेट करो अगले लाइव चैट का। और इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को पता है बहुत से क्वेश्चंस करते हैं, वो जितने भी ये जो सोशल मीडिया के चैनल्स हैं वो सब शैलजा जी हैंडल करती हैं, क्योंकि अफसोस मेरे पास इतना समय नहीं है ठीक है। तो जनरली लाइव सेशंस के थ्रू आई ट्राई टू गिव आंसर्स टू यू। सो दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों, थैंक यू एंड नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे। अगली बार जो है मैं आप लोग के क्वेश्चंस लूंगा, आई ट्राई टू कम more often. Okay, thank you dear, take care, bye bye.